Okay, so that computer or computing concepts that we are going to start with an introduction. Computers store and process numbers, letters, and the words that are often referred to as a data. That whatever the data that we are going to given as an input to the system, ultimately it is going to be converted into the one language. That language is known as a machine language. Okay, so that only a single language is understood by the computer, and data which will be in the format of numbers, letter, or the words, whatever. Computer never thinks about that or never work on that. It works only on the given data which is in the machine language. उसको कुछ भी आप दो वो machine language पे ही process करेगा. So how do we communicate that data to the computers, or how do the computer store and process the particular data? These are the two big questions. Communication कैसे होता है, and how that computer stored and process that particular data which is as an input by the user. Since the computers cannot understand the Arabic numerals or the English alphabets, we should use the some codes that can be easily understood by them. Like we have just discussed one example, that there is a telegram concept. Previously, before the telephone was invented, there is a telegram concept through which we can communicate. Some codes are given to that particular uh, some sort of happy Diwali, good morning, good afternoon, like these are the some keywords, and they are coded with the numbers. So with the help of that machine we just send the numbers from source to the destination. जैसे सोर्स अगर है अमरावती में और डेस्टिनेशन है नागपुर में, तो सोर्स यहाँ से सेंड करेगा विद द हेल्प ऑफ दैट मशीन 12 नंबर 1 to 12, and it will be received at a Nagpur as a destination 12. So both will having a coding with that particular 12. 12 का मीनिंग क्या है, तो हेलो, हाउ आर यू, ये अगर कुछ मीनिंग है तो वहां पे रिकॉग्नाइज हो जाएगा कि इन्होंने 12 भेजा है, यानी ये पूछ रहे हैं कि हाउ आर यू. दे विल सेंड द रिप्लाई एज एन आई एम फाइन, एज एन मे बी द 22 अगर नंबर आता है नागपुर से अमरावती, so it is what the response for our how are you, that is I am fine or we are good. So that kind of a communication will took place. Before, the telephone was not there, but later on when we are having a telephone and the computer systems, that computer system is also having the same principle. With that particular principle they are working with the small codes, and that codes is having a यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स, राइट. सो ए को ए के लिए क्या कोड रहेगा, ए अल्फाबेट के लिए, बी अल्फाबेट के लिए क्या रहेगा, ऐसे सारे अल्फाबेट्स के लिए, कैपिटल अल्फाबेट्स के लिए क्या कोड रहेगा, स्मॉल अल्फाबेट्स के लिए क्या रहेगा. देन कुछ स्पेशल सिंबल्स इज देयर, एट द रेट, हैश, डॉलर साइन, परसेंट साइन, एम्परसेंट, स्टार है, numbers है 1 2 3 4. So all even if some operations are there, arithmetic operations are there, so all these numbers, all these particular characters, including numbers, digits, they are having a special code, and that should be the universal, right. So in all modern computers, storage and processing units are made of a set of silicon chips, each containing a large number of transistors. So that was a particular part of fourth generation, that huge number of transistors they are using. Then with the help of that transistor they can manage particular storage and processing with the help of a silicon chips. A transistor is a two-state device that can be put off and on by passing the electric current through it. So a single transistor, if you are considering, it has a two stage. Once we are giving the input, it will work on as a on mode, and once their input, that will be proceed to the next transistor or next device, so that will be become off. So on off, these are the two modes in which that particular transistor works. Then later on, since transistors are sensitive to the currents and act like a switches on off, we can communicate with the computers using electric signals, which are represented as a series of a pulse, no pulse condition. Like our ECG, that graph was there. If there is a pulse,
then it will show upward, then downward, upward, downward, upward, downward. Okay. So what exactly it measures? It measures the stroke. Once there is a stroke, it will jump into the high direction, और like earthquake measuring unit, ये भी होगा आपको पता कि earthquake को अगर measure करना है तो उसके लिए एक device रहता है. So that device vibrates like earth vibrates, that device also vibrates, and it will measure on the Richter scale. So that is what nothing but the pulse. So here in case of a computer communication, we also use the same principle. There is a pulse or no pulse conditions, and through which we can communicate. For the sake of convenience and ease of use, a pulse is represented by the code. As we know that the computer understands the binary language, that is a machine language. So that particular computer only deals with the two numbers. Binary means two. That code is 1, and if there is no pulse, that code is 0. So that means if there is a pulse, that means it is treated as a 1, and if there is a no pulse, it will treat as a 0. So 0 1 0 1 0 1 formations was there, and with the help of that we can communicate, or we can give the data to the computer, and computer stores it or process it. That 0 is the no pulse. They are called bits, an abbreviation of a binary digits. Okay. तो ये जो दो है, एक सिंगल है तो एक सिंगल बिट हम उसको बोल सकते हैं, और दो है तो बिट्स, राइट. 0 and 1, 1 or 0. So that these are the bits, and they are the binary digits, and with the help of that we are going to be communicate with the computer and the computer device, connected devices, right. A series of ones and zeros are used to represent a number or a character. अब इसमें नंबर भी रहेगा, कैरेक्टर भी रहेगा, and thus they are provide a way for humans and computers to communicate with one another. This idea was suggested by John von Neumann in 1946. यानी हमारे आजादी के पहले ये चीज हो चुकी थी कि 0 और 1 और ऐसा कुछ तो भी एक सिस्टम है. दैट सिस्टम इज हैविंग इनपुट, आउटपुट और communication type, and through which that binary digits are given to the system, and they will recognize it, convert it, and give the data to the computer system. So that was 1946 invention by John von Neumann. The number represented by a binary digits are known as a binary numbers, and the language which communicates, the language which will be used with the help of a zeros and ones is called as a binary language. The computers not only store the numbers but also perform the operation on them in a binary form itself. Okay. तो अगर हम देते हैं 1 0 plus 2 0, तो 1 0 का जो बाइनरी फॉर्म रहेगा वो ऐड किया जाएगा 2 0 के बाइनरी फॉर्म में, और जो आंसर आएगा वो 3 0 रहेगा, बट दैट 3 0 अगेन इन द बाइनरी फॉर्म, राइट. सो 1 0 भी बाइनरी फॉर्म में, 2 0 भी बाइनरी फॉर्म में, और 3 0 भी बाइनरी फॉर्म में, बट when the data is represented on a screen or shown on the screen, it will show only the 3 0, not the binary format of a 3 0, right. So this is what the particular part of a computing concepts. Now we will directly touch to the number systems. Now when we are talking about that number systems, basically there are 0 to 9. These are the major numbers, and rest of the other are the combination of a numbers. 1 0 यानी क्या है, तो 1 और 0 का एक combination है. 1 1 1 2 1 3 and up to so on. These all are the combinations. But 0 to 9 जो है वो actual numbers हैं जो कंप्यूटर में हम यूटिलाइज करते हैं, बाकी तो combinations हैं. So now starting with the decimal part, we have a 0 to 15. Total 16 numbers are there, including 0. So there are 16 numbers. The decimal number system, binary number system, octal number system, and hexadecimal number system. These are the four major number systems that we are going to be used in the computer for a conversion purpose, or normally that for mathematical also. Decimal, binary, octal, and hexadecimal. These are the four number systems we use. How then decimal number system is mapped with the binary, then octal and hexadecimal, that we will observe in the particular chart. That binary number system
when we are thinking that it is a combination of four zeros. A single decimal number is represented in a binary as of four zeros. In an octal, it is a single zero. In a hexadecimal, it is a again single zero. Now, how this is going to be work? Okay, so when we are talking about the decimal number system, a complete numbers are there, which is having the base 10. But when we are talking about the binary number system, it starts from a right side to the left side, right? The first right hand side 0 indicates that the first position, which is having the value as a 1. Then moving towards to the left side, right to left, we are going to be proceed from right side. First digit in case of a binary, there are four zeros. First zero indicates that the first particular digit. Then second number or second place indicates that the two numbers. Then 2 raised to the power, it is just like that, 2 raised to the power 0, then 2 raised to the power 1, then 2 raised to the power 2, and 2 raised to the power 3. Are you getting what I am trying to tell you? Anyone? So can you repeat, please? Yes, exactly. So if सर having any तुमचा query, आवाज you थोड़ा can. फ्लक्चुएट होता है. आवाज फ्लक्चुएट होता है क्या? हो. No, sir. No, sir. ओके. चला सर मी मीटिंग लीव करो मैं जॉईन करतो. हा चालेल. आपण रेकॉर्डिंग पण करत आहे. समजा मधात जर असं काही अडचण आली तर आपल्याला ते पण अवेलेबल आहे. ठीक आहे So सर. when we are focusing on a binary column. Okay, leave the octal and hexadecimal and focuses only on a binary and decimal, right? So that binary is having representation 0 0 0. Four zeros are there, correct? So the first zero indicates that if it is a binary, it means it has a particular base 2. Binary है तो उसका base रहेगा 2. So Sir. first, yes, Sir, we are moving from right to left or left to right? we are moving from right to left. Means पहला जीरो जो राइट का है, जहाँ पे सेकंड रो में 1 रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, that is a first position. हाँ. And then थर्ड रो में 1 स्विच हो गया, शिफ्ट हो गया, that was the second position. Then again shift sir. अगर होता है तो third position, and the last was a leftmost digit. जो leftmost रहेगा वो last रहेगा. So we are moving from a right hand side to the left hand side. Okay. Okay. So the first digit of a binary is 2 to the power 0. What will be the value? 2 to the power 0? 1. 1. Correct. So it represents the 1 value, right? Then 2 to the power 1. एक से increment हो जाएगा. So the value will be the 2. So that is will be the value of that second position. पहली position की value 1 थी because 2 to the power 0 था, right? We will start from a 0. Then second value जो है 2, that becomes because of a 2 to the power 1. Then moving towards the third position, that 2 to the power 2. The value is 4. 8. 4. Sorry, 4. 4. ठीक है. So that 4 is what a value of that the third position, correct? And the leftmost part, that was the last value, 2 to the power 3. 8. That will be the 8. ठीक है. So any confusion for these four values? 0 0 0 0. Anyone? अगर ये values एक बार आपको समझ गए, then we will have a complete decimal conversion into the binary with that particular chart. First value from right hand side 2 to the power 0, second value 2 to the power 1, third value 2 to the power 2, and
fourth one 2 to the power 3, so that values for this 4 that 1 2 4 8, so that is a simple 1 to 4 8. If you want to remember it, so that for a binary 1 to 4 8, 1 is a rightmost first value, then second rightmost value, that is 1 2 2 value, and then 4, and then last leftmost value is a 8. Okay. So now we are going to map that particular value with decimal number system. Correct. So the decimal number system represents the 1 as a digit. So we will use the 2 to the power 0 position, which indicates the 1 value. So that the conversion of a decimal number into the binary form is 0001. In octal, it is represented as a 1 as a 1, and hexadecimal also 1 as a 1. Okay. But in case of a binary, because it has a base 2, it is going to be represented with the value in the position 2 to the power 0. That is the rightmost first position. Correct. Then, if you want to represent 2, in that case, we are also having the second position, which is represented with the help of 2 to the power 1. The value is 2. So we are mapping the decimal value with the binary one with their positions. Correct. So the second position is reserved, and the value, that binary value, becomes 0010. So whenever there is a term in front of you, there is that number comes in front of you, 0010. So its equivalent decimal value is 2. Whenever there is a number in the binary format at 001, 3 times 0 and 1, then the equivalent decimal number is 1. Moving further, if you want to represent the third number 3 in a binary form, so how we can do it? First position plus second position means 2 to the power 0 plus 2 to the power 1. That collectively forms the value 1 plus 2. That is nothing but the 3 decimal. So 0011, that is nothing but the representation in the format of binary of a number 3. Correct. In moving further, 4 value, that is a decimal. 2 to the power 0, it will not use because it has only 1 value. Then 2 to the power 1, it is having the 2 value. So 1 plus 2, that becomes 3. अगर उसको आप 2 to the power 2 भी लेते हो तो number बड़ा हो जाएगा. So instead of that, we will put the 2 to the power 0 as a 0, 2 to the power 1 as a 0, and we put as a 1 into the 2 to the power 2, and it will achieve the value that is of 4. So we will represent decimal number 4 in the binary format as a 0 1 0 0. Correct. Then 5 0 1 0 1, then 6 0 1 1 0. How that 6 becomes? That first value we are taking 2 to the power 1, and the value is 2. Then 2 to the power 2. That value is 4. 4 plus 2, that is 6. Are you getting what we are doing right now? Yes, sir. Yes, sir. Anyone having any confusion, they can raise their hand. Sir. Yes, service. Sir means the 1 जो भी जगह पे है उतनी power 2 पे अंदर जाएगी और that will be represented in octal and hexadecimal place. नहीं, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल जो है वो तो एज इट इज मैप होता है. लगभग 9 डेसिमल तक एज इट इज मैप हो जाएगा. ऑक्टल बदल जाएगा, सॉरी ऑक्टल ये 8 के बाद बदल जाएगा. हेक्साडेसिमल 9 तक चलेगा. ठीक है, इन केस ऑफ डेसिमल पार्ट. ठीक है, तो हमको सबसे पहले कन्वर्शन ये ध्यान में रखना है कि डेसिमल टू बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, नॉट द कन्वर्शन, रिप्रेजेंटेशन. डेसिमल का जो 0 है उसको बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. जहां पे भी 1 आपको दिखेगा बाइनरी में, इट मींस दैट 2 to the power that position,
और पोजीशन क्या है? जीरोथ पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है और थर्ड पोजीशन है. ये 0 1 2 3 these are nothing but the power to the base 2. जो 2 का पावर है, 0 है पहले, बाद में 1 है, बाद में 2 है, बाद में 3 है. 0 1 2 3, right? These are Sir, the power. sir Yes. means if we have to represent 16, then the one must be at the fifth position. Yes. 2 Okay. to the power 4. 4. तो वो नंबर आ जाएगा 1 0 0 0 0, 4 times 0. Thank you, sir. Yes. Again, anyone? No one? Everyone understand? So if you everyone understand, can I ask that 89, how we can represent 89? Raise the hand. In the binary format. Make sure that you have to ask the question if you are not understand, or if this actually ये जो नंबर सिस्टम है, ये जो चार्ट है, ये फिजिकली ही एग्जीक्यूट करना चाहिए यानी पढ़ाना चाहिए, बट राइट नाउ इट इज नॉट पॉसिबल. एंड यस, अवंतिका, यस यस. Sir, 89 can be represented as 1000 into means 1000 and 0001. 8, आर यू श्योर? 89 na? Sir, यस यस. 89. 1000 1001. यस, अगेन सौरभ. 1011 100100. हाँ हाँ हाँ, ओके ओके. अगेन एनीवन? 89. 1011 001. Okay. Anuradha, okay. And anyone else? So can I again say that हाँ 1000 हाँ 1001 89. ओके. 1011 001. हाँ 1011 001. Okay. Who said it? अभी किसने आंसर दिया? Yes, sir. Your name, please. Ishwari. Okay okay. 1011 001. So can we combine this 8 and 9? 1000 1001. Is it possible? No sir. राइट. तो हम इसको ऐसे नहीं कर सकते कि 8 ये अलग से ले लो और उसको 9 को अटैच कर दो, या फिर प्लस प्लस तो नहीं होगा, बट उसको जस्ट अटैच कर दो. ठीक है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट we should know that particular table. ठीक है. ये जो टेबल है, ये टेबल को हमको थोड़ा सा फोकसली ध्यान देना है इसके ऊपर, that how it will generate the particular value 2 to the power 0, rightmost place, 2 to the power 1, 2 to the power 2 and 2 to the power 3. If the number is more than that of 15 or more than that of the range, then 2 to the power 4, 2 to the power 5, 2 to the power 6 up to so on. We are having with the help of that, जैसे हम 64 बिट हम बोलते हैं या फिर 32 बिट बोलते हैं OS. So it is depend on that 2 to the power 32 बिट. यानी क्या? तो 0 और 1 अभी हमने देखा. बिट किसको बोलते हैं?
where it is 0 and 1 is represented as a bits, right? So when you are talking about 32-bit operating system, 64-bit operating system, so it is nothing but the 2 to the power 32. That much of combinations can be used in your operating system. So that much of a computational power. Then 2 to the power 64. So that 2 to the power 64, ये कितनी बड़ी वैल्यू होगी? शायद कैल्सी में आएगी भी नहीं, नॉर्मल कैल्सी में 2 to the power 64, 32 भी नहीं आएगी. Number of digits that are too large, साइंटिफिक कैलकुलेटर में आ जाएगी. So that what it indicates that the binary number combinations are there, and because of that, that much of a data can be accessed, generated by the system, and that's why it is faster. हम जब भी लैपटॉप लेते हैं या फिर कंप्यूटर सिस्टम लेते हैं तो हम वही देखते हैं कि ये 32 बिट है या 64 बिट है. फिलहाल अभी तो 64 बिट ही बहुत ज्यादा यूजफुल है और बहुत ज्यादा परचेज भी किया जाता है. ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका स्पीड ज्यादा होता है. क्यों स्पीड ज्यादा होता है? क्योंकि उसमें बाइनरी कॉम्बिनेशंस बहुत ज्यादा होते हैं. ठीक है, दैट इज व्हाट अप टू द 6th. देन 7th इज रिप्रेजेंटेड एज अ 0 ट्रिपल 1. In case of octal, again it is 7. In case of hexadecimal, again it is 7. But when we are talking about the 8 is having the base decimal value as a 8, and binary value is 1000. Now it is going to be represented as a 10. ठीक है, ऑक्टल में वो क्या रिप्रेजेंट करता है? 10 रिप्रेजेंट करता है. उसकी स्टार्टिंग जो है ऑक्टल नंबर की वो 0 to 7, स्टार्ट टू एंड जो है वो 0 to 7 है, क्योंकि ऑक्टल है. ऑक्टल यानी 8 नंबर्स, 0 से लेके तो 7 तक. 1 से लेके तो 8 तक अगर रहते हैं तो 8 रहते थे, बट 0 से लेके है स्टार्टिंग विद 0. सो 0 to 7 दैट आर 8. देन इट विल जंप टू द 10th वन. ठीक है, 9th इज रिजर्व्ड वन. ठीक है, so that 10th, 11, 12, 13, 14, 15, 16 and 17, it is consecutive. ठीक है, so we have to just remember that decimal number to the octal, if we are saying, so from the 8th decimal number it is converted as a 10 in a octal, right? Then we are discussing about the 9, that is 1001. It is represented as 11 in octal, and it is represented as a 9 in a hexadecimal. After 9 is reserved. What they are saying that 9 is reserved, 8 and 9 are reserved by the hexadecimal. That's why they put it as a 10 in a octal. ठीक है, ये पूरी नंबर सिस्टम एक दूसरे के साथ अटैच है, ये कुछ अलग नहीं. कॉलम अगर अलग है तो इसका मतलब ये अलग है, ऐसा नहीं है. सो यहाँ पे ऑक्टल में उन्होंने 7 के बाद ऑक्टल की जो सीरीज है 7th नंबर 0111 का जो ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन है 7 के बाद उन्होंने 8 and 9 ये नहीं लिए. क्यों? क्योंकि 8 अगर लेते तो 9th हो जाता. तो 9 यानी ऑक्टल जो बाइनरी सिस्टम, ऑक्टल जो सिस्टम है, नंबर सिस्टम है, वो बेस 8 से है, वो 9 से नहीं है. तो इसलिए वो नंबर नहीं लिया, और वो नंबर असाइन हो गया हेक्साडेसिमल में एज एन 8 and 9. सो ऑक्टल स्टार्ट्स from a 10, 11, 12, but hexadecimal में जब हम 9th नंबर की रो देख रहे हैं, so 9th in a decimal represented as in a binary 1001. ऑक्टल में रिप्रेजेंट क्या करेगा? 11, और 11 को रिप्रेजेंट करेगा हेक्साडेसिमल में 9. as a 9 in a decimal and hexadecimal both are same, but after just a second. After 9th in a decimal, if there is a 10, that 10 is represented as in binary 10 10. ऑक्टल में 12 रिप्रेजेंट करेगा. अब यहाँ पे 9 के बाद के जो नंबर्स है हेक्साडेसिमल के, वो तो रिजर्व है 10 ऑनवर्ड, सो इट विल रिप्रेजेंटेड एज अ ई, कैपिटल ई. इट इज नॉट स्मॉल, कैपिटल ई. देन 11 को रिप्रेजेंट करेगा कैपिटल बी. देन 12 को रिप्रेजेंट करेगा कैपिटल सी.
13 को कैपिटल डी, 14 को कैपिटल ई एंड 15 को कैपिटल एफ. So these are the representations, or even if we can say that it is a management of a numbers as well as their equivalents. Okay, तो 9 के बाद 10 11 ऑलरेडी ऑक्टल में रिजर्व था, और 11 के बाद के जो भी नंबर से 17 तक वो भी ऑक्टल में रिजर्व थे. इसकी वजह से इन्होंने क्या किया, हेक्साडेसिमल ने कैरेक्टर्स लिए A B C D E F. So whenever there is a ABCDEF appears in your number system, we can came to know that it is nothing but the hexadecimal number. Whenever there is a 01011010, okay, so we came to know that the number is having a base 2. It is a binary number, right? But there is a little bit confusion in between the decimal and octal. ऑक्टल नंबर कौन सा है, डेसिमल नंबर कौन सा है. तो इन दोनों केस में उसका बेस गिवन रहेगा, बेस दिया हुआ रहेगा नंबर के नीचे. ठीक है, देन वी कैन रिकॉग्नाइज विच नंबर इज ऑक्टल एंड विच नंबर इज डेसिमल. जनरली 0 to 7 ही कंफ्यूजन होता है. आफ्टर 7 ऑक्टल नंबर इज रिप्रेजेंटेड एज 10 11 12 13, बट it is not represented more than the particular base value. Okay, so that is what a number system in a particular chart. Up till now, any confusion, any question, any? सर Yes. सर रिजर्व मतलब Reserve in terms of what, कि अगर एक चीज मैं जैसे ये अगर लैपटॉप जो है मेरा अभी जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कैन सेम लैपटॉप आई कैन शेयर एट द सेम टाइम विद द सम माय फ्रेंड्स और माय ब्रदर और सिस्टर? नो सर. Is it possible? Certainly not. ठीक है. So it whenever there is a lecture, आपका लेक्चर रहो या फिर मेरा लेक्चर रहो, ठीक है, तो उस केस में जो भी रिसोर्सेस हमारे पास है, सबके पास मोबाइल्स है, लैपटॉप्स मोबाइल जो भी है, ठीक है, इंटरनेट के लिए जो भी टूल्स हम यूज कर रहे हैं, जैसे मैं जियो यूज कर रहा हूँ, ठीक है, आपके मोबाइल का इनबिल्ट आप जो सेल्युलर नेटवर्क होगा वो यूज कर रहे होंगे. सो दैट इज रिजर्व फॉर दिस टाइम पर्टिकुलर. इसके बाद आप शेयर कर सकते हो, बट उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप नहीं शेयर करोगे. करेक्ट. सिस्टम में भी वैसे होता है कि इफ द पर्टिकुलर वैल्यू और इफ द सम डेटा इज असाइन, जैसे यहाँ पे बाइनरी के लिए उन्होंने 4 zeros असाइन कर दिए, या फिर 2 to the power 0 1 2 3 4 अप टू 32 और अप टू 64 ये असाइन कर दिया, तो सेम थिंग्स दूसरे नंबर सिस्टम के लिए असाइन नहीं हो सकती. अगर कर दी तो वो हो जाएगा कंफ्यूजन. हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज दिस टू? आइदर दे आर सिमिलर और दे आर डिफरेंट. अगर यहाँ पे 8 को रिप्रेजेंट किया जाता है ऑक्टल में 8 से और हेक्साडेसिमल में भी 8 से, तो कंफ्यूजन ये होगा कि ये 8 एक्चुअली ऑक्टल है कि हेक्साडेसिमल है जब डेसिमल का कन्वर्शन करेंगे हम. ठीक है. सो दे पुट सम नंबर्स रिजर्व टू द वन नंबर सिस्टम एंड सम नंबर्स और कैरेक्टर्स ABCDEF रिजर्व फॉर अ हेक्साडेसिमल. कुछ कैरेक्टर्स उन्होंने इधर रिजर्व करके रखे हैं, कुछ कैरेक्टर्स नंबर्स वहां पे रिजर्व करके रखे हैं, सो दैट ओनली दैट नंबर सिस्टम कैन यूज इट एंड देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन इन बिटवीन देम. इवन इफ हम कोई कंफ्यूजन होता है ऐसा नहीं है, सिस्टम को भी हो सकता है. अगर आप टॉकिंग कंप्यूटर की अगर बात करते हो, टॉकिंग कंप्यूटर मीन्स अगर आप कंप्यूटर को वॉइस के थ्रू अगर कमांड देते हो, मोबाइल को तो देती हो ना, अगर आप बोलते आई नो, तब उसने यनो लेना चाहिए कि KNOW लेना चाहिए? KNOW. ये हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम उसके आगे आई बता रहे हैं, और INO आई नो ऐसा कोई बोलता नहीं है ना. मी नाही, मराठीत तरी म्हणतो आपण, किंवा मी नाही, तो मी नाही. ओके, बट कॅन वी से इन इंग्लिश आय नो? आय आणि यनो, आय लिहिला आणि त्याच्यानंतर एनो लिहिला, हे वाक्यच नाही आहे. म्हणजे वाक्य म्हणजे काय आहे नेमकं? काहीच नाही आहे. ठीक आहे, एक तुम्ही नो म्हणा किंवा आय डोंट नो म्हणा, ठीक आहे, किंवा आय विल नो यू, त्यात आय विल NO हा वापरताच येणार नाही. बट हाऊ वी कॅन जस्टिफाय टू दॅट पर्टिक्युलर कम्प्युटरला प्रोनाऊन्स जेव्हा आपण करू, किंवा अलेक्सा,
त्याच्यानंतर सिरी, हे जे काही बोर्ड्स आहेत, दॅट बोर्ड्स हाऊ वी कॅन केम टू एक्नॉलेज दॅट पर्टिक्युलर वर्ड pronunciation, right? So when we are typing it creates a much more problem. आप तो भी उसको बोल सकते कि to play this particular song, ठीक है, नो से या फिर KNOW से हम उसको स्पेल भी बता सकते हैं, बट स्पेल का जो मीनिंग है, जो भी वर्ड्स हम यूज करें उसका ही मीनिंग नंबर सिस्टम में अगर सेम है, that creates the confusion to the computer or even if to the system. So that in order to avoid it, they are reserved one. Okay. Anyone else? Anything? So up till now that number system is clear. Okay. Now we will switch to, yes. Sir, can you explain the base that is जो लेफ्ट साइड में दिया है, डेसिमल बेस 10, बाइनरी बेस 2? Yes. So that decimal is having the base 10. That means it is having a particular, that जैसे डेसिमल का हम बोलते हैं तो डेसिमल द नेम इटसेल्फ दैट इट इज अ 10th, ठीक है, तो 10 यानी क्या, तो उसका बेस जो है, सो जैसे जीरो का हम बोलते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, these are the complete numbers. Okay, so that will be understood, decimal number system that we will understood. But when we are talking about the binary number system, we never understood that what exactly the meaning of that number 000 100 010, ठीक है, so they are having their base of a calculation. So decimal का base कैलकुलेशन के लिए 10 रहेगा, बाइनरी का बेस 2 रहेगा, ऑक्टल का 8 रहेगा और हेक्साडेसिमल का 16 रहेगा. तो ये आगे जाके आपको उसके जो एग्जांपल्स रहेंगे उसमें भी पिक्चर क्लियर हो जाएगा. बट इनिशियली फ्रॉम देयर नेम इटसेल्फ देयर बेसिस आर गिवन. डेसिमल है तो डी यानी डेसिमल 10 ऐसा हम बोल सकते हैं, बाइनरी का 2, ऑक्टल का 8 एंड हेक्साडेसिमल का 16, राइट? Thank you, sir. Okay, shall we move? Yes, sir. Anyone having any query? Kalyani, have you raised the hand? Any query? No. Okay. No. Okay. No. So, decimal number system is the most common number system used by the human being. It is a positional number system that uses the 10 as a base to represent a different values. ठीक है, उसका 10 बेस लेना यानी क्या, तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं और उसको कंसीडर करते हैं. जैसे 1 2, तो जैसे हम बोलते हैं ना यूनिट प्लेस, देन एकक, दशक, शतक, हजार, 10,000, लक्ष, दशलक्ष, मराठीत झाले. इंग्लिश मध्ये काय म्हणतो आपण त्याला, युनिट, देन टेन्स प्लेस, then 100 place, 1000 place, 100,000, 10,000, 100,000, lakh, 10 lakh, crore, 10 crores. Exactly. So these are the places. So on that basis, if we want to represent a single number, जैसे अगर मुझे 1 को represent करना है तो it is a unit place, correct? Then 10 को 11 को represent करना है तो उसका यूनिट के बाद का सेकंड पोजीशन जो रहेगा, then 100 को, then 1000 1000, ठीक है, 100 बाइनरी में चला जाएगा, 1000 1564 and all that these numbers. So all these numbers is having a base 10, जो हम बोलते हैं ना यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, ये जो भी है, ठीक है. So that is what a base 10. Similarly बाइनरी को भी खुद का एक बेस है, that is a 2. हेक्साडेसिमल को खुद का एक बेस है, that is a 16. ऑक्टल का एक खुद का एक बेस है, that is a 8. So whenever we use that number system, their individual base representation is used so that it can not be mixed up with the another number system. ठीक है. So therefore it is also known as a base 10 number system. ठीक है, decimal. In this system, 10 symbols are available for representing the values. These symbols includes the digit from 0 to 9. जैसे 10 symbols है, इसमें 10 numbers हैं, ठीक है. जैसे हमने इसके पहले देखा डेसिमल में 0 to 9 and rest of the other are the combinations.
0 to 9 जो नंबर्स एक्चुअल नंबर्स हैं और उसके बाद के तो सभी के सभी उसके कॉम्बिनेशंस हैं. The common operation performed in the decimal number systems are that are the arithmetic operations plus, minus, multiplication and division. The decimal system can be used to represent both the integer as well as the floating point values. Now integer value is what? Your marks in your सब्जेक्ट. फिजिक्स में कितने मार्क्स मिले, मैथमेटिक्स में कितने मिले, इंग्लिश में कितने मिले, मराठी, हिंदी और कोई समझो इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर एज अ ओकेशनल सब्जेक्ट होगा. तो जो मार्क्स रहेंगे आपके वो क्या रहेंगे? इंटीजर वैल्यू. यानी उसके बाद जो भी नंबर रहेगा डेसिमल प्लेस जो है जैसे 60 मार्क्स है 60.00 ये क्या इंडिकेट करता है? 60 इंडिकेट करता है. उसके बाद के जो 00 हम लिखते हैं क्या? नॉर्मल प्रैक्टिस में हम नहीं लिखते हैं. करेक्ट. सो वी जस्ट पुट 60. राइट. सो 60 इज एन इंटीजर वैल्यू. बट अगर आपके परसेंटेज 74.49 है तो वो इंटीजर वैल्यू हो गई क्या? Is it integer value? No, it is a floating value because 74.49 तो 74 भी नहीं है वो पूरे, 75 भी नहीं है पूरे. इन दोनों के बीच में फ्लोट हो रहा है, तैर रहा हो बीच में. यानी उसके बीच में कहीं तो भी है 49 है तो यानी 74 एंड हाफ भी उसको बोल सकते हैं या फिर 75 को हाफ कम ये भी बोल सकते हैं. So that's why it is treated as a floating point value. So decimal number system can be represented with the absolute integer value, that means 74.00 or 74.49 as a floating value. Both values can be represented by the decimal